record on the, yes. So we have to discuss today the resonance in forced oscillation. Resonance in forced oscillation, है ना? फोर्स्ड ऑसिलेशन में रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करना है आज। तो यदि हम पिछले लेक्चर की एग्जांपल ले लें कि एक स्विंग है ना, स्विंग झूला, और उस पे कुछ लोग बैठ के झूल रहे हैं आराम से, ठीक है, और इसको कांस्टेंट फोर्स यदि दे दिया जाए तो एक कोई यहां पर है, दैट इज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स यहां पे लग रहा है। दिस इज F0 साइन PT, और ये जो स्विंग है ये ऑसिलेट कर रहा है। दिस इज द स्विंग, इधर आया और फिर ये वापस जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में गया और फिर वापस आएगा, और इस तरह से दिस इज द ऑसिलेशन। तो देर तक ऑसिलेट करने के लिए, है ना, देयर इज नीड ऑफ इंप्रेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू द स्विंग। तो ये बन जाएगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन में यदि जो फ्रीक्वेंसी है, इस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी ओमेगा और एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी P, मतलब F इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई या P अपॉन 2 पाई, ये एक्सटर्नल फोर्स, ये सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, और दिस इज एफ एस ऑफ द दिस इज एफ कैपिटल F कर दीजिए, फोर्स की फ्रीक्वेंसी। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी यदि बराबर होगा, एफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ में भेज देना वो, है ना, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी बराबर होगा तो क्या होगा, तो रेजोनेंस होगा। ये बाय डेफिनेशन आप पहले से जानते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि जैसे आर्मी का जो मार्चिंग है वो हैंगिंग ब्रिज पे प्रोहिबिटेड होता है कि डोंट मार्च ड्यूरिंग पासिंग थ्रू द हैंगिंग ब्रिज। ऑर्डिनरी ब्रिज नहीं, हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज कहाँ है, तो सबसे आसान हैंगिंग ब्रिज का एग्जांपल देना होता है तो कहते हैं कि हरिद्वार में है हैंगिंग ब्रिज, है ना, हैंगिंग ब्रिज। उस ब्रिज के ऊपर मार्चिंग जो है प्रोहिबिटेड है आर्मी का। क्यों? क्योंकि यदि हैंगिंग ब्रिज है तो उसका अपना सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है, और किसी वजह से मार्चिंग फुट स्टेप के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए तो फिर वो रेजोनेंस में आएगा, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और फिर वो टूटने का डर रहेगा, तो वो ब्रिज के रूप में होता है। तो इस टूटने को जो फिजिकल मीनिंग है वो रेजोनेंस है, और उसी चीज को हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज रेजोनेंस? सर वेट से फोर्स नहीं लगता है? हाँ, वेट से फोर्स नहीं लगता है? लगता है, वेट से फोर्स लगेगा, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस फोर्स, हमको पीरियोडिक फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो जब फुट स्टेप होगा तो आप जानते हैं ना, अभी गणतंत्र दिवस का परेड देखा होगा, तो जब आर्मी की टुकड़ी मार्च करती है तो एक साथ उनके पैर उठते हैं और एक साथ पैर टच करते हैं, तो वो बड़ा रिदम होता है। सो दैट कैन से कि पीरियोडिक मूवमेंट हो रहा है वहां पे, उससे उसकी मनाही होती है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो चलिए डिफाइन करते हैं रेजोनेंस की। व्हाट इज रेजोनेंस? तो आप कह सकते हैं कि एट ड्राइविंग
at driving frequency means external, that is P upon 2 pi. Driving frequency comparable to the natural frequency of system. हम स्विंग हमारा यहाँ पे सिस्टम है, तो उस क्या होगा ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है एफ एस इज इक्वल टू एफ पी, इसी चीज को हम लेकर के यहाँ बात करते हैं। तो ये बराबर हो जाए कंपेरेबल the amplitude is maximum. Amplitude is maximum and the phenomena is known as resonance. And the particular driving frequency is known as the resonant frequency. This is resonant frequency. ठीक है, तो ये phenomena is resonance, but you have this is known as resonance. तो resonance में तुरंत किसी से पूछिए कि resonance क्या है, तो 1 मिनट में वो यही कहता है कि resonance जो होगा fs is equal to ff, माने एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी जब सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा तो रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, क्विक आंसर तो सही है, थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करना है तो हम इसको कहेंगे कि एट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कंपेरेबल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, द एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम एंड द फेनोमेना इज known as resonance, and this particular driving frequency is known as resonant frequency. ठीक है, अब now the amplitude will be maximum when the denominator is minimum. This will be so when its first differential coefficient is 0. First differential coefficient is 0. That is क्या है, आप जानते हैं कि एम्पलीट्यूड का जो एक्सप्रेशन है जिसको हम लिख सकते हैं xt is equal to f0 under root of omega square minus p square का whole square plus 4bp this whole under root into multiply with sine of pt minus theta. ये एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है। तो ये जो पार्ट है एम्पलीट्यूड, ये दिस इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर पार्ट विल बी मिनिमम। तो डिनोमिनेटर, दिस डिनोमिनेटर इज मिनिमम। डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा,
जब इस पार्ट को लेकर के हम डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, और उसको 0 के बराबर पुट करें जो मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन है, तो उसके लिए कहेंगे कंसीडर डी ऑफ डी टी डी पी, किसका, ये डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर पी स्क्वायर, और ये पुट कर दीजिए 0 के बराबर। तो इससे जो हमको मिलेगा कंडीशन, दैट कंडीशन गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैक्सिमम। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, यू सी दिस इज 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4b स्क्वायर 2p इज इक्वल टू 0, है ना। ये हो गया डिफरेंशिएशन में। r आप इसको माइनस माइनस ये हो तो माइनस 4p ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस ये 4 है और ये 2 है, तो 8b स्क्वायर p, 8b स्क्वायर p is equal to 0, or 4p omega square minus p square is equal to 8b square p. So this is 4 cross 2 and this p cancel, तो क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, r दिस इज r, p स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो ये कंडीशन है, या p फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। या आप इसको लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी f ऑफ फोर्स इज इक्वल टू p अपॉन 2 पाई, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन 2 पाई, you can see here 1 upon 2 pi अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर का मतलब k स्क्वायर, k अपॉन m माइनस 2b स्क्वायर मीन्स r by 2m का होल स्क्वायर, r by 2m का होल स्क्वायर। So this frequency is 1 upon 2 pi k by m, this is k by m minus r square upon 2m, this is the f of s। ये हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में आप देखिए, दिस इज ओरिजिनल जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे थोड़ा कम होता है, क्यों, r की वजह से, वेयर यू कैन सी वेयर r is coefficient of damping, r is coefficient of damping, ठीक है, r coefficient of damping है। और coefficient of damping मतलब फ्री ऑसिलेशन में when r is equal to 0, no damping। अगर सर r और k को बराबर कर दिया जाए तो, k को क्यों करेंगे, r को 0 कर दीजिए, k is the force constant, r और k बराबर हो ही नहीं सकता, r is damping, no damping माने कोई लॉस ना हो। यदि r damping 0 हो जाए तो f of f is equal to 1 upon 2 pi under root k by m, तो ये क्या हो गया, ये तो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी होगी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। तो डैम्पिंग के वजह से डैम्पिंग ये नो डैम्पिंग माने क्या है, दिस इज द आइडियल केस, दिस इज योर आइडियल केस, ठीक है।
कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें कुछ न कुछ डैम्पिंग ना हो, है ना। फाइनाइट डैम्पिंग हमेशा ही बना रहेगा, चाहे वो फ्रिक्शन के रूप में ही हो। तो यदि डैम्पिंग, तो इसका मतलब इसको हम कह देते हैं ओमेगा जीरो, है ना। ओमेगा जीरो, दिस इज द आइडियल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो in absence of damping, the amplitude resonance occur when the frequency of the impressed, अब इसको कैसे हम कहेंगे कि in the absence of damping, the amplitude resonance occurs when the frequency of the impressed force coincide with natural frequency of the oscillation। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमारा यहाँ आया है, इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख करके रख दिए, दैट इज देयर। अब इसकी वैल्यू को, किसकी वैल्यू को, ये इस वैल्यू को एम्पलीट्यूड के एक्सप्रेशन में रख दिया जाए तो हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी मिल सकता है। ठीक है, तो उसको हम ले आते हैं। फॉर द एम्पलीट्यूड या फॉर द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, for the maximum amplitude for the maximum amplitude, the denominator of the amplitude must be minimum, that is, this is omega square minus p square का whole square plus 4b square p square, है ना। when p square is equal to omega square minus 2b, तो p स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, r ओमेगा स्क्वायर और p स्क्वायर की वैल्यू क्या है, p स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, अब b स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, नॉट इट इज हियर, इट इज 2b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 4b स्क्वायर और यहाँ पे होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस 2b स्क्वायर प्लस दिस इज 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। So this is cancelled
R, this is 2b square ka whole square. This is the whole square, this whole square. So 2b square is equal to 4. 2 square ka whole square is 4. B ka square 4. 4b power 4 plus this is 4b square. This is 4b square omega square. 4 into 2 to 8. B square or b square, b ke power 4. So R, this is 4b square omega square minus 4b to the power 4. R, this R 4b square, take it common, तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 2b square. Omega square minus 2b square. So this value and R under root of, we take this 4b square minus omega square 2b square under root of this. So this value is 2b under root omega square minus 2b square within the bracket. Within the bracket ये एक्सप्रेशन हो जाएगा. सो जो xt है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या है? x of t is equal to f0. f0 और डिनोमिनेटर, द होल डिनोमिनेटर इज 2b under root omega square minus 2b square. ये हो गया. And into sine of pt minus theta. pt minus theta, this. So amplitude part जो होगा, amplitude, that is amplitude maximum is equal to f0 upon 2b under root omega square minus 2b square. This is the amplitude maximum. So what you have in this case, this shows that the maximum amplitude depends upon the damping. Damping, which damping? This is B. This is damping B. Damping B. Smaller the damping, smaller the damping, smaller the damping, greater amplitude. Greater amplitude. If damping is 0, if damping is 0, that is B is equal to 0. B is equal to 0. A max is equal to F0 upon 2 into 0 into under root omega square minus 2b square. So this value is infinity. A max is infinity. So this is the region. Infinity. This can be seen that the damping control the resonance. That is, damping controls the response at resonance. Response resonance. और आर्मी की मार्चिंग जो है इसी पॉइंट के लिए रोका जाता है. आर्मी प्रोहिबिटेड है ना
मार्चिंग, ठीक है, आर्मी की जो मार्चिंग है ब्रिज से पास होते के लिए, यही दिस कंडीशन। तो 12th में इसके रिजल्ट को हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं ये रिजल्ट को। यहां पर बीएससी में क्यों होता है उस चीज को हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये स्थिति बनता है। सो दिस इज अबाउट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की so that the maximum amplitude in forced oscillation is this much. Ab the difference, phase difference between displacement and ड्राइविंग फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना फेज डिफरेंस और किस तरह से ये क्रिएट होता है इसके ऊपर। तो वी हैव द expression of displacement। क्या है डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन? xt इज इक्वल टू f0, दिस इज अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर p स्क्वायर, दिस ब्रैकेट क्लोज्ड, इनटू साइन pt माइनस थीटा। ये एक्सप्रेशन है where theta is equal to tan inverse 2bp upon omega square minus p square। ये तो at case 1, at low frequency p is less than omega small p is less than omega, that is small frequency, theta is equal to tan inverse, this is 2b into 0 upon omega square minus 0, so this value is tan inverse 0 and this is 0. Case 1, at low frequency theta is equal to 0. Case 2, at high frequency, p is greater than omega, so this theta is equal to tan inverse minus 2b upon p, that is pi, Case 3, at resonance frequency, that is omega is equal to p, theta is equal to tan inverse 2bp upon omega minus omega, that is tan inverse infinity, and which is pi by 2. This is the pi by 2. So we can have the plot, how the plot is. So for the plot, we can see here, this is P, driving frequency. This is driving frequency, and this is pi by 2, and here it is pi.
This is pi by 2 and this is pi. And this part is. So this particular is connected with pi, that is omega is equal to p, and the rest of the things for the low frequency, this is the case 1. This is the case 1. Case 1 क्या है? This is zero damping. This is zero damping. Now for low damping, this case is simply here. This is low damping, and this is high damping. This is high damping. Means case number 3. So this is case number 3. Here case 2, and this is case 1. 1, 2, 3. So the phase is, what can we say? The phase is 0. This phase is 0, no phase when damping is 0. At high frequency, the phase is pi. This one is high damp frequency. At resonance frequency, this is the pi by 2. So these driving force have the plot something. This one is a phase theta in this way, and here the frequency is on the x-axis. The phase and axis is the represented in this way. Now the next is sharpness of resonance. Sharpness of resonance. Sharpness of resonance, if we start with the plot, पहले plot कर लेते हैं और फिर इसको explain करते हैं. तो ये suppose this is driving force. This is driving force frequency, that is P, and here it is the amplitude. This is amplitude. So what kind of plot we will have? We have the ideal plot. We have the ideal plot is something like this. That is zero damping. That is zero damping, means B is equal to 0. And when the damping is low, so this plot is something like this. This is low damping. This is the low damping. And this one is a high damping. This is high damping. Now, what we find, this point, this particular point, this is omega is equal to
P of R is resonance frequency, and this region is when P is less than PR, that is less than damping frequency, resonance frequency. Here P is greater than P of R, that is a resonance frequency. So low frequency region, and here it is high frequency region. This is high frequency region. So this plot, experimental plot, can be explained with the as the amplitude of forced oscillation. The amplitude of forced oscillations is maximum when the frequency of the applied force has a value which satisfied the condition of resonance, satisfy the condition of resonance. The amplitude falls when the frequency changes from this value. The term sharpness of resonance refers to the rate of fall of amplitude, with the change in driving frequency on either side of resonant frequency. Either side of resonance frequency. So we have two words, one is sharp and other is flat. So if the fall in amplitude is large, for small deviation of the frequency, from resonance value. So it is called as sharp. The second word is flat. If the fall in amplitude is small
for a small deviation of frequency from resonance value. So in this way, we can differentiate about the sharpness of the resonance. That is, we have two conditions. One is sharp and other is flat. So this is the today lecture that we have to discuss in the condition of resonance, and which is especially a amplitude resonance.